दशामा को 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने नम आंखों से विदाई दी। वडोदरा शहर के कई परिवारों में दशामा की स्थापना की थी, जहां भक्तों ने पूरे 10 दिन तक भक्ति, सेवा और पूजा के साथ मां की आराधना की। और आज पूजा के अंतिम दिन भक्तों ने श्रद्धा से भरी आंखों से मां की प्रतिमा का विसर्जन किया। शहर भर में विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से किशनवाड़ी स्थित कृत्रिम तालाबों में विसर्जन की विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने चाक चौबंद बंदोबस्त के साथ व्यवस्था संभाली। अधिकारियों की मौजूदगी में विसर्जन स्थल पर हर गतिविधियों पर नजर रखी गई, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। भक्तों की भारी भीड़ विसर्जन में उमटी और पूरे माहौल में भक्ति, भावनाएं और आस्था का संगम देखने को मिला। આજરોજ આ પૂર્વ વિસ્તારના કિશનવાડી વિસ્તારમાં આવેલું કૃત્રિમ તળાવ છે, તેમાં લગભગ 600થી ઉપરાંત મૂર્તિનું વિસર્જન ચાલી રહ્યું છે। વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ટીમ, સમગ્ર અમારી સફાઈ કામદાર સ્ટાફ અને પોલીસ સ્ટાફની સમગ્ર સાથે રાખીને શાંતિપૂર્વક દશામાની મૂર્તિનું વિસર્જન થઈ રહ્યું છે। ચોક્કસથી બધાને સૂચના એવી છે કે જે કચરો કચરાપેટીમાં નાખે, કળશની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે અને કચરાપેટીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી। તમામ નાગરિકોને વિનંતી છે કે કચરો કચરાપેટીમાં નાખે અને જાહેરમાં કચરો ન કરવા। અહીંયાથી ઓછામાં ઓછી 25 થી 30 અમારા સફાઈ કામદારો છે, સુપરવાઇઝર સ્ટાફ છે, ઇન્સ્પેક્ટર છે, વોર્ડ ઓફિસર છે, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર છે, તમામ अधिकारियों हाजिर है અને તમામ हमारी टीम सज्ज है। અત્યારે हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।